Okay. So good evening everyone. So आज मैं पढ़िया 4th मे रु 10th में जहाँ भी करंट अफेयर्स थिला बेसी नहीं अल्प किछि अछि. अच्छा ये सब टू आगु माने पूर्व मेन कथा काली जहाँ काली किंबा परदिन मोदी किछि कहिचंदी कोन केतेटा एग्जैक्टली कोन कोन सुना किणी कार पुलिंग यूज करबा फॉरेन करेंसी को बढ़ेबार अछि. फॉरेन रिजर्व टा खाली हो जिवो जदि हमें सेव न करबा तो सुना किणी मने ताले अच्छा ठीक अछि. तो आत्मनिर्भर भारत से जेबेठू से आसिलेनी से जिनसटा से कहि आछन आत्मनिर्भर भारत से सेबेठू से जिनसटा कहि आछन जदि हम डाटा देखिबा हम से जिनस रे इंप्रूव एपर्यंत हे पारु न हो. हम एबे भी वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री खास करी पेट्रोल आउ मेन हला गोल्ड आम जी कंज्यूम करूछु आम से प्रोड्यूस ही करि पारनु हला. तो सब जिन आम क्रिटिकल जो मिनरल रेयर अर्थ मिनरल जहाँ भी आम रिसेंटली जी भी न्यूज पढ़ुचु सब थे इवन न्यूक्लियर कथा आम जो पढ़ी है ये जो प्लांट गुड़ाक केमती थोरियम आम पाखे अच्छी आम पाखे जहाँ अच्छी ताकू आम केमिति यूटिलाइज करि परिबा प्रॉपर्ली आ बाहर देश रु किछि भी आनिबा हमको स्टॉप करियार अछि. एटा नॉट ओनली इंडिया पे एबरो ए स्टेटमेंटा सब कंट्रीज रे एटा चली माने वर्तमान समस्त जे भी तांकर हेड अछंती ए जिनसटा अनाउंस करचंती. तो मे बी किछि गोटे असुविधा निहात थिबो नले एमती हे न थांता. ओके तो तुम मैंने भी टिके जुडिशियसली से हिसाब रे आ पेट्रोल खर्च करनी चली कि ना आसो चली कि जीवा आसा करो हाँ ना नले ईवी आड़े गोटे किन दियो ना कौन कुछ ठीक अच्छे हो. सो एटा तो आमे पढ़ी थरे भी वीबी जी राम जी सुनछ आ पूर्व नाटा कौन थिला मनरेगा है. तो मनरेगा रे कौन थिला आउ ए एक्ट रे कौन चेंजेस हेची मेन माने बहुत इंपोर्टेंट के वी कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स हैला बिकॉज़ मनरेगा बहुत आगु चली आस्थला केबेठू 2005 2005 रु एटा आस्थला महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एथरे कौन करा जाए जो माने गाँ गहली रे छोट मोट काम सब करती निजर लाइवलीहुड तांको केमिति आमे श्योरिटी दे परिबा कि तांको गोटे प्रॉपर रोजगार माने इनकम गोटे मिलू. दैट वाज द मेन एम बट से एम टा फुलफिल हे पारु नथला हैला जेति कि हमर टारगेट थिला सेति हे पारु नथला. तो एबे किछिटा चेंजेस करके अना गला विकसित भारत जी राम जी जोटा को अछि बीबी जी राम जी एक्ट. ओके तो कौन चेंजेस तो एटा माने तमरो स्टार्ट हबा को जाउची जुलाई रे प्रॉपर्ली ए एक्ट ता इंप्लीमेंट हबो 1 जुलाई रे सेति पे एटा न्यूज रे अछि. अदरवाइज तो एक्ट हैला ए सब जिंस हमें पढिथिलु. So it is a comprehensive rural employment and development program. Basically it provides a legal guarantee गोटे legal guarantee माने legal माने बुझ पारथु जदी तांको मिलिला नहीं देन से माने लॉ रो यूज भी करि परिबे. ओके एमिति खाली कहिबा स्कीम एटा नुह इट्स अ लीगल गारंटी टुवर्ड्स ऑब्वियसली सब जिंस हमें करले विकसित भारत 2047 हमर जहा विजन अछि नेट जीरो के को ईयर जो हमर एम अछि कि हमें जीरो एमिशंस को आसी जिबा नेट जीरो एमिशन हमर एटा किमते टारगेट अछि कि हमको गोटे डेवलप्ड नेशन हबार अछि बाय 2047 हमको एमिशंस पूरा कमे दबार अछि जीरो को आनियार अछि नेट जीरो टारगेट गोटे अछि
ईयर गुडा को मैच द फॉलोइंग रे पचार दो विकसित भारत 2047 हैला नेट जीरो मन रखिबो 2070 2070 सुधा हमको नेट जीरो एमिशंस टारगेट अचीव करिवार अछि हैला 30 तो एबे ही अछि कोट तमे परिव चांस ने सो मेन एम कौन थिला लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेजिलियंस आउ जो माने रूरल वर्कर अछंदी तांको केमते हमें प्रॉपर माने सैलरी वगैरह देके तांको ये कर परिबा एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी हैला एटा थिला तो मेन एथे चेंजेस हेची एटा ए जिंसटा मन रखिबो एरा को प्रकार गोटे स्कीम दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंड शेयरिंग स्कीम हैला तीनटा कैटेगरी अच्छी नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स गुड़ाक जितकी की भी रहिले सेमान को पाए तमरो सेंटर दबो केते 90% हैला आउ से जो यूनियन टेरिटरीज हे गले सॉरी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हे गले हिमालयन स्टेट्स हे गले से माने 10% देबे सिमिलरली जो माने यूनियन टेरिटरीज अछंती सेठी ई स्कीम पाई सेंटर 100% फंडिंग दबो बट ओडिसा पाई आउ बाकी जति कि हमरो स्टेट्स रह गले सेठी 60% के दबो सेंट्रल गवर्नमेंट 40% हमको स्टेट्स को दबा को पड़ेबो ए स्टेटमेंट बेसिस रे एटा पचार दबो हैला तो नो डाउट इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आगुरु कोन थिला आगुरु सब सेंटर दउथला सेति पे मे बी एटा एते इंप्लीमेंट हे परलानी तो स्टेट रो भी दायित्व अछि ना स्टेट वर्कर्स मान को पे सेति पे ए जिंसटा बना हला हाउएवर यूनियन टेरिटरीज एमसी रे भी सेंटर अंडर ही सब चले ओके तो 60-40 रेशियो 90-10 रेशियो मन रखिबो जेति की भी हिमालयन स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मन को पे 90:10 आउ अदर स्टेट्स पे 60-40 ओके हाँ ठीक अछि सो मेन से चेंज ता मन रखिबो आउट कोन थिला 100 डेज आगुर केते थिला 100 डेज रो वेज एबे 125 डेज एटा गोटे चेंज होना हेची तो मनरेगा रे 100 डेज रो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करियार माने लेखाटा थिला एबे सेटा 125 चेंज हेची तो रेशियो आउ ए डेज ता हमको बस मन रखियार अछि एटा थ्योरी वगैरह अच्छी देखे देबो पीडीएफ मिलले अच्छा ए माने भी न्यूज रे थिले बाइगर ट्राइब कोन पे न्यूज रे थिले कौन पे न्यूज रे थिले कोठी कर रहे मैंने एनी आइडिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ so 13 children belonging to the Baigar tribe which is a PVTG group particularly vulnerable tribal groups माने ट्राइबल ग्रुप्स तो बहुत अच्छा हमर से भितर भी जो मानो बहुत लोअर स्टेट रे अछंती मतलब बहुत वल्नरेबल कंडीशन रे अछंती से मानो हमें ए ग्रुप रे रखू हैला ए पीवीटीजी को ने कि यूपीएससी रे भी बहुत क्वेश्चंस पचारा जाए इंडिया रे वर्तमान केतेटा पीवीटीजी ग्रुप अछंती 75 हैला एग्जैक्ट नंबर मन रखिया को पड़ेबो सेही भितरु ओडिसा रे केतेटा पीवीटीजी ग्रुप अछंती 13 हैला टोटल इंडिया रे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जेमिति हम ओडिसा रे भी बहुत सारे ट्राइब अछंती सेही भितरु भी बहुत माने अधिक वल्नरेबल ट्राइब्स किछि माने थिबे तो 13टा ट्राइब हमरो ओडिसा रो पीवीटीजीस रो अछंती आ इंडिया रो जदि हम देखिबा 75 पीवीटीजीस अछंती हैला ओडिसा रो हाईएस्ट पीवीटीजी कहि परिबा हमें ऑल इंडिया रे जदि हम देखिया बुझिबा मध्य प्रदेश ओडिसा ए स्टेट गुडा करे पीवीटीजी ग्रुप रो संख्या टिके अधिक अछि तो ए बाइगर ट्राइब पीवीटीजी अंडर रे बिलोंग करंती दैट इज इंपोर्टेंट हैला
They were recently rescued from bonded labor in Chhattisgarh's Kabirdham district. तो bonded labor रो तांको rescue करा जाइतला. एटा हला news टा बस सेतिक. हला. So कहली they are one of India's PVTGs. अंडमान एंड निकोबार रे भी बहुत सारा PVTGs अछंती. हला जे ए सब माने. They are found in central India. Sorry. In the state of Madhya Pradesh and in smaller number in Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand. हैला तो टोटल 4टा स्टेट्स रे हमें देखिया को पाओ बट मेजरली मध्य प्रदेश. लैंग्वेज से माने कौन स्पीक करंती जेतु से माने बैग ट्राइब तो लैंग्वेज इज सिमिलर बैगनी. ओके दिस इज देयर लैंग्वेज व्हिच इज अ डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ी. छत्तीसगढ़ रो एटा डायलेक्ट बैगनी टा. Okay, heavily influenced by Gondi and Hindi. So these are the dialects. तो हिंदी सहित भी बराबर हमें कही परिबा. अच्छा, livelihood जेतु से माने semi nomadic. They practice slash and burn cultivation. हैला locally called बेवार. से slash and burn cultivation को locally बेवार नारे भी कहा जाए. And now depend mainly on minor forest produce. Okay. Live-in relationships are common among the Bega. If marriage does not take place, the man compensates the woman's family for the loss of a working member. है तो बहुत एडवांस है मैंने. Okay. Tattooing is integral to their culture. है सब not only Bega tribe हमें जितनी की भी tribe देखिबा tattoo is nothing कि हमें एबे नुआ नुआ देखो जो हम माने ग्रैंड पेरेंट्स की जो माने टिके ये थिबे तमे देखिबो किछ ना किछ ओम फोम किछ ना किछ गोटे छोटाटे करथिबे. दैट इज आल्सो टैटू. तो एमान कर भी टैटू इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर विथ स्पेसिफिक टैटू डेजिग्नेटेड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड डिफरेंट बॉडी टाइप्स. ओके टैटूज आर मेड यूजिंग काजल डिराइव्ड फ्रॉम रामतिला सीड्स. महुआ ट्री दिस आर फर्मेंटेड एंड डिस्टिल्ड टू प्रिपेयर एन इंटॉक्सिकेंट जोटा कि तांको डाइट रो गुटे एसेंशियल पार्ट माने मद. ओके नहीं. अच्छा Baiga tribe is first community in India to be granted habitat rights reflecting the deep connection with the forest. हला एटा गुटे इंपोर्टेंट पॉइंट. दे आर द फर्स्ट कम्युनिटी इन इंडिया जाको कि जोडी से माने रहि चंती तांकर हैबिटेट राइट्स तांको प्रोवाइड करा जाई छि बिकॉज़ ऑब्वियसली तांको नंबर निहाती अधिक थिबो सेति पे तांको सेरा दिया हितबो. तो वन ऑफ द इंपोर्टेंट कम्युनिटी सेति पे जेहेतु एटा न्यूज रे आसिला Baiga tribe तो हमको मन रखिया को पड़ेबो को एरिया रे से माने अछंदी पीवीटीजीस रे बिलोंग करछंदी कि नाही. हला ए दीटा जिंस खास करके मन रखिया को पड़ेबो. गवर्नर रो गोटे इशू हेतला रिसेंटली कोन द गवर्नर हु फॉरगॉट हिज जॉब. तमिलनाडु रे कोन हेतला किए जितेला तमिलनाडु रे केते केते वोट थिला तो दरकार केते थिला. तो जदि टेक्निकली देखिया को गले के जिते नांती बट मेजॉरिटी हिसाब रे जदि हम देखिबा तीनटा भीतर जदि हम कंपेयर करबा देन कंपैरेटिवली ही हैज वन बट एज पर द लॉ माने जदि हम देखिबा जेति की मेजॉरिटी दरकार सेति से हे नथिले. तो गवर्नर कोन पे माने एटा गोटे क्रिटिसाइज कला होले आर्टिकल आछि गवर्नर को ऊपर व्हाई गवर्नर हु फॉरगॉट हिज जॉब और मु लिखिछि मिसयूज ऑफ गवर्नर्स पावर. सो ये जो एडिटोरियल टा आछि जेतले पीडीएफ मिलिबो काइंडली पूरा एडिटोरियल टा पढिबो. ओके so the editorial discussed the controversy surrounding the governor's conduct after the 2026 Tamil Nadu elections where no party secured a chair or secured a clear majority, raising concerns about constitutional morality, neutrality of governors and federalism. Federalism माने हम कोन बुझछु
सेंटर स्टेट है हाँ फेडरलिज्म माने सेंटर स्टेट किए बुझे पारिबो प्रॉपर्ली सेंटर स्टेट इज राज्य सरकार एंड केंद्र सरकार what do you mean by federalism? Very important term. There are two types of government: unitary government, federal government. Federal, unitary. Now I hope you can explain. जितेबाला इमरजेंसी लगी जाए ए एग्जांपल को सब मन रखिबो जितेबाला इमरजेंसी लगी जाए आमे गोटे फेडरल रु यूनिटरी गवर्नमेंट को कन्वर्ट हे जाऊ आमे जनरली आमे गोटे कोन क्वासी फेडरल नेचर हमर हगे नै क्वासी फेडरल माने हाफ फेडरल हाफ यूनिटरी आमे फ्लेक्सिबल आमे चाहिले फेडरल रु यूनिटरी हे परिबा केतबेले किछटा कंडीशन अछि जेमिति की इमरजेंसी जदि नेशनल इमरजेंसी लगी गला देन स्टेट रो पावर कहा पाखु को पड़ाए सेंटर पाखु को देन सेही केस रे हम ही गलु यूनिटरी गवर्नमेंट बट जनरली वी आर ए क्वासी फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल कहि परिबो हला तो फेडरल माने सेंटर स्टेट ठीक अछि बट सेंटर रो भी दायित्व अछि स्टेट रो भी दायित्व अछि तांकर लोक मान को पई हला ओडिसा रो लोक मान को पे सेंटर रो भी दायित्व अछि स्टेट रो भी दायित्व अछि बट जते बडा इमरजेंसी लागि गला स्टेट आउ किछि बुझिबो नाही डायरेक्ट आमे पावर काहा को दे देबो सेंटर को दैट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हला तो फेडरलिज्म जदी हमर रहिबो नाही जो प्रेसिडेंट्स रूल लागि जाय किछि स्टेट रे सेटा कोन हे जाय यूनिटरी हे जाय हला तो एटा होछि सबठु मेजर जिंस हमर कंट्री पई फेडरलिज्म जदि रहइबो नाही देन आमे पूरा हाथ खोली देलु कहा पाखरे सेंटर पाखु को आमे सब पावर दे दोछ फेडरल जदि आमे रहइबो नाही तो ई फेडरलिज्म ता मेंटेन करिया को पड़े सब जगह रे हला तो जदि जेहेतु क्लियर मेजॉरिटी मिलिला नाही देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कोन रहिला कोन लेखा हे जाऊ जदि एमति किछि न हैला के जितबा कथा किछि लेखा हे छि किछि लेखा हे नै पावर कहा पाखरे मिसयूज ऑफ पावर लिखा है गवर्नर्स पावर तो गवर्नर पाखरे कोन कोन पावर अछि ठीक देखिबा हमें हैला तो सेठी पे ए जिंसटा कंट्रोवर्सी गोटे हेथिला अब गवर्नर हाथ रे से एक्सेप्ट कला नहीं बुझि गेलो सो टोटल सीट्स 234 टीवीके को मिलला 108 सीट और मेजॉरिटी दरकार थिला 118 सीट तो एटा से अचीव करि परला नै सो जदी देखिया नो पार्टी सिक्योर्ड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सो कौन हला आर्टिकल 164 कौन कुहे टेलीग्राम रे आसुनी पीडीएफ टेलीग्राम रे राय एकेडमी रो ऐप अछि सेठी पाई परिबो ओके आर्टिकल 164 कौन कहूची द गवर्नर appoints the chief minister. Conventionally, the leader of the single largest party is invited first to form the government. Okay, तो ये पावर टा कहारो गवर्नर रो तो जदि से मिसयूज कला देन फेडरलिज्म को खतरा हे परिबो कि नहीं हमर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऊपर क्वेश्चन उठी परिबो कि नहीं सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गवर्नर ही हैज टू बी अनबायस्ड इन मेनी केसेस और एबे रिसेंटली गवर्नर ऊपर बहुत न्यूज आस्थेला एक तो वेस्ट बेंगल रो गवर्नर तमिलनाडु गवर्नर माने नुआ सब अपॉइंट हेचंती हला सेटा गोटे न्यूज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ता बाद ई तमिलनाडु रो गवर्नर गोटे स्पीच रे हेर फेर करथिला से जोटा कहबा कथा सेटा कहला नै उल्टा पलटा कहला तो दैट मींस ही इज बायस्ड एंड अगेन इट इज प्रूविंग दैट ही इज बायस्ड टुवर्ड्स सम पार्टी दैट शुड नॉट बी द केस okay so what is the allegation against the governor pratham kathala he refused to invite the single largest party leader immediately se kariya katha se kale mane invite kariya ko refuse kale kiye single largest party leader kiye tvk asked for support letters proving majority beforehand se kahile ki tame tamar majority prove karo even after getting okay 108 सीट्स से स्टिल से कहले तमे प्रूव करो ओके
gave only 72 hours to prove the majority. ये तीनटा एलिगेशन लगी गवर्नर को ऊपर. Okay, this was criticized as arbitrary and politically biased. Again मुझे जिनसे कहली कि आप पूर्वर भी केसेस है जो कि बायसनेस आम देखा पाई. So different commissions जमती कि तुम सब शुणुव सरकारिया कमिशन, पुंछी कमिशन, वेंकटचलय कमिशन से माने ये गोटे ऑर्डर देथिले ये सब कमिशंस गुडा कौन कौन प्री पोल अलायंस फर्स्ट प्रेफरेंस शुड गो टू अलायंस फॉर्म्ड बिफोर इलेक्शंस. इलेक्शन पर भी अलायंस बने दियंते तो इलेक्शन पूर्व जो माने अलायंस बनाती तांको फर्स्ट प्रेफरेंस दबा कथा. दिस इज एज पर दिस कमिशंस रिकमेंडेशंस हैला खालटारे कुहाउनी. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जब सेमती कहीं भी अलायंस एग्जिस्ट करू नहीं देन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करबा कथा. तो गवर्नर कले की करना इमिडिएटली करिया कथा इमिडिएटली से करना से 72 आवर्स देले प्रूव करो देन तमे पाओ ये सब स्टोरी चलला. पोस्ट पोल अलायंस पोस्ट इलेक्शन कोलिशंस सी सेम पॉइंट हला जो माने इलेक्शन परे कोलिशन गवर्नमेंट बनाती तांको थर्ड प्रेफरेंस दबा कथा. तो ऑब्वियसली जो तामने ए तीनटा पॉइंट रो ए गोटे पॉइंट आमे कोन बुझिलु कि जहा पाकर अधिक वोट थिबो ताको मिलेबा कथा. जदि बा सेमती किछि आर्टिकल रे जिनसटा लिखा हेनी बट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिशंस ए जिनसटा मेंशन करा हेछि. एटा स्टेटमेंट रे पचार दबो तुमको हैला एमिति बुले कि स्टेटमेंट पचारिबो. सो व्हाई वाज द गवर्नर्स एक्शन क्रिटिसाइज्ड? Majority must be tested on the floor. The governor should not determine majority in Raj Bhavan. Okay, majority must be tested in the legislative assembly itself. तो ये जो टर्म टा एटा खालटा रेटे लिखा है फ्लोर टेस्ट माने हला सेटा कि जो जगह रे दैट मींस असेंबली रे ही डिसाइड हबो राजभवन रे डिसाइड हबो नहीं हला का पाखरे मेजॉरिटी अछि कि का पाखरे नहीं एट द माने सेही पॉइंट रे ही तमरो हबा कथा. Violation of constitutional convention. The single largest party was not immediately invited, so he violated the constitutional convention. Hello? Scope for horse trading. Short deadlines encourage defections, resort politics, political instability. 72 hours दिया गला majority proof करिया पे set period रे माने कौन एंटी डिफेक्शन लॉ कथा हम पढ़िथिलु. डिफेक्शन भी पारे पार्टी चेंज लोक कर देबे कि कोन हबो ए सब जिंस ही परिबो. तो ए सब जिंस को चांस ही दबा कथा नुह हैला. तो एट द पॉइंट ही शुड हैव डिसाइडेड कि जितला कि नहीं कथा हैला एतिकी हैला. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर न्यूज़. अच्छा आर्टिकल 164 रो क्लॉज 2 गोटे भी अछि हैला जोठी हम देखिलु कि गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर. Council of Ministers is responsible to the legislative assembly, not the governor. एटा भी important हैला. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे से माने गवर्नर को तांकर सब कथा एक्सप्लेनेशन दबा पई किछि मैंडेटरी नुह. इट इज रिटन इन आर्टिकल 164 क्लॉज 2 हैला. बुझ परछो जो माने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे हैला जो एबे से की जितला कोन ता ना थलपति सी जोसेफ थलपति थलपति. तो तांको पार्टी राउजी भी थिबे दे आर नॉट रिस्पांसिबल टू गवर्नर से माने रिस्पांसिबल टू द असेंबली हैला. फ्लोर टेस्ट अगेन से वर्ड आसला फ्लोर टेस्ट जते बेले मेंस रो आंसर लिखिबो एमते किछि क्वेश्चन आसीबो ए सब टर्म गुडा को लिखिया को पड़िबो. फ्लोर टेस्ट सुप्रीमेसी माने जो जगह रे जिंस सेही जगह रे ही सॉल्व हो जिबा कथा. SR Bommai case and Rameshwar Prasad case 2006 established that a majority must only be tested on the floor of the house. Again ए केस गुडा को भी important को केस रो हम जानि माने एमती गोटे डिसीजन निया जाय थिला. फ्लोर टेस्ट रो कथाटा कोठी उठिथिला SR Bommai केस रो भी उठिथिला रामेश्वर प्रसाद केस रो भी उठिथिला हैला. Giving only 72 hours to prove a majority encourages that हम already बे पढ़िलु यदि 72 hours दबा then हमें we are inviting anti-defection law to be acted. Okay. पूर्व एमती किछि हेतिला कि एटी सब लिस्ट तमरा लिखा है. गोवा 2017 कांग्रेस 17टा सीट हैला लार्जेस्ट पार्टी सेही टाइम रे थिला. बीजेपी पाखरे सेतबल थिला मात्र
13टा सीट. So Governor Mridula Sinha invited BJP, bypassing the largest party entirely. है तो मिसयूज कर नहीं पावर गुड़ाक. मणिपुर 2017 कांग्रेस पाखरे 28टा सीट थिला, बीजेपी पाखरे 21टा सीट थिला. गवर्नर काको देला प्रेफरेंस? बीजेपी ओवर द लार्जर कांग्रेस पार्टी. तुम बेकारटारे कांग्रेस को एते ये करछो. देखो द नंबर्स इज कर्नाटका बीजेपी वाज 104, कांग्रेस और जेडीएस रो कॉम्बिनेशन थिला 115. स्टिल गवर्नर वाजूभाई वाला इनवाइटेड बीजेपी and gave 15 days for floor test. है 15 दिन टाइम नहीं आइला ये जिनसटा पाई भी. So the Supreme Court cut it to 1 day. 15 दिन नहीं होना 1 day भितर ये करो. तो ये सब प्रीवियसली भी है सारी. दिस इज नॉट ए न्यू केस. है एटा तो आप पढ़ लो. अच्छा, इंडियन एग्जांपल्स ऑफ माइनॉरिटी. A line to be important. A government falls only if it loses a no confidence motion, not at the governor's doorstep. No doubt governor खाली appoint करिबो हैला किछटा जिंस पावर अछि, बट एई सब जिंस रे तारते जो मिसयूज करछि पावरटा सेति कि हमें माने ठीक न हो. Atal Bihari Vajpayee 1996 made PM by President Shankar Dayal Sharma, resigned after 13 days. No floor test denial. हैला PV Narasimha Rao minority government survived no confidence motion by just 1 vote. ये सब previously हे साथ कि minority government भी तमारा पाई थी किसी जगह. मनमोहन सिंह 2004 minority coalition with outside support, he completed also 5-year term. Okay, so कौन करा जिबा कथा इशू चली आसी. प्रीवियस इशू गुडा को देखिलु, एबर इशू भी देखिलु. कौन करिया कथा? गवर्नर मस्ट फॉलो एस्टाब्लिश्ड कन्वेंशंस, माने जहाँ भी सरकारी कमिशन कहला, पुंची कमिशन कहला, सेटा फॉलो करबा कथा. दे शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस एंड एस्टाब्लिश्ड कमिशन रिकमेंडेशंस व्हाइल इनवाइटिंग पार्टीज टू फॉर्म गवर्नमेंट. फ्लोर टेस्ट शुड बी सुप्रीम. एबे बुझ पातु फ्लोर टेस्ट कोन हला? संगे संगे ही डिसीजन नबा कथा. कोठी? लेजिस्लेटिव असेंबली रे ही, नॉट आउटसाइड. टाइम लिमिट मस्ट बी रीजनेबल. Okay, adequate time should be provided for proving majority to avoid political instability. So 72 hours जो दिया इतला, maybe आउट के अधिक टाइम देतले इतना, but that सेटा भी ठीक नो. सबुडु फर्स्ट पॉइंट हला इटा सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट हला. जहाँ भी डिसाइड करो तुम सेठी ही से दिन डिसाइड कर देला बेटर. पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी एंश्योर्ड. जो बायसनेस जमा भी रहबा कथा नुह. Okay, so these are the way forward. कौन करा जाए पारिबो? Governor is expected to act as a neutral constitutional authority, not as an agent of the ruling party. जोटा कि हमें previous examples रे पे देखिलु. बीजेपी को सपोर्ट दिया ही थिला हैला, बट से पावरटा केबे भी गवर्नमेंट रो माने गवर्नर रो नाही सेटा. ओके, इट इज अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल दोस कमिशंस. Arbitrary exercise of discretion undermines federalism, democratic ethics upre question, federalism upre question, and constitutional governance upre question. Okay, so entirely बुझी गला सिनेरियो कौन सब चलथिला. ठीक अछि. तो एटा क्लास के जन कहथिला एटा विषय पढिबा. तारा कोन? tactical advanced range automation weapon. Okay, go to test Hitler recently. So DRDO and Indian Air Force, they have conducted the maiden, mane first flight trial of Tara. रो full form ta important पचार दबो. Tactical Advanced Range Augmentation Weapon System off the coast of Odisha this Thursday. Tara is India's first जहाँ भी सब important India's first indigenous glide weapon system. एटा गोटे कौन?
ग्लाइड वेपन कहबी कौन से इंडिया रो प्रथम माने निजे बनैथिबा आमे ग्लाइड वेपन सिस्टम हैला जे कि कौन करिवो तमरो जो पुराना वारहेड्स गुडा को हम यूज करथुलु तार किछि प्रिसाइज टार्गेट्स नथिला तो एई जिनसटा यूज करिकी हैला ग्लाइडिंग व्हीकल ग्लाइड स्लाइड से बुझ परतबो तो ये तमरो नै कि टार्गेट्स प्रिसाइजली टार्गेट्स को पहुंचे बारे हेल्प करिवो जो पुराना कन्वेंशनल वारहेड्स गुडा को अछि जो मानकर किछि भी टार्गेट आगु डिसाइड हे न थाए जेमते आमे बे नुआ नुआ सब बनौछु मिसाइल जोटा कि फायर एंड फॉरगेट अग्नि जेमते हला फायर एंड फॉरगेट तमे फायर कर देलो फिर भूली गलो से निजे जाई कि तारो टार्गेट को हिट कर दबो बट आगु जो सब बनाउथला सेथरे सेमदी किछि सिस्टम नथिला तो सेही जिंसटा को डायरेक्शन दबा पाए तारा हेल्पफुल हबो तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोन ग्लाइड वेपन सिस्टम GWS ग्लाइड वेपन सिस्टम एटा मन रखिबो जे कि कौन करिवो इट हेल्प्स टू कन्वर्ट कन्वेंशनल अनगाइडेड वारहेड्स इनटू प्रिसाइज गाइडेड वेपन्स फॉर एक्यूरेटली एंगेजिंग ग्राउंड बेस्ड टार्गेट्स बुझ परछो जो टार्गेट अछि सेठी जाई कि से हिट करिवो ओके तो एटा किए डेवलप करछि According to the Ministry of Defense, the modular range extension kit has been designed and developed by the Research Center Imarat along with other DRDO laboratories. Okay, it is aimed at improving the range and lethality of low-cost aerial weapons. Achha. So again, a full form time important. Tactical advanced range augmentation माने रास्ता देखेबा बेसिकली हला तो सेटा से कहला इट इज अ मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट एंड इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम डिजाइन्ड टू कन्वर्ट अनगाइडेड वारहेड्स इनटू प्रिसिजन गाइडेड weapons. So this system enhances the range, lethality and strike accuracy of low cost conventional weapons. तो तुमको नुआ वेपन्स बनाया को पड़िबोनी जो वेपन्स हम पाखरे अछि सस्ता वेपन्स हमें ताकू भी ए सिस्टम यूज करके ग्लाइड वेपन सिस्टम यूज करके हमें यूज करि परबा बेबी हला आउटा को टारगेट रे पहुंचे भी परबा तो खर्च निहाती सेव होला हमको नुआ वेपन बनाया पड़ला नहीं किछि करे पड़ला नहीं फिर तार टेस्टिंग करो ये सब रहला Tara glide weapon system can be launched from multiple fighter aircraft in the Indian Air Force inventory. हैला Indian Air Force पाखरे जहाँ भी सब अच्छी आयन कौन तेजस वगैरह जहाँ भी अच्छी से सब थ्रू माने तमे एटा यूज करि पारे increasing operational flexibility. हैला सेमति किछ नै कि तमे आ ए हेलीकॉप्टर रू ही एटा यूज करियार अछि फ्लेक्सिबल तमे जो भी हेलीकॉप्टर चले यूज करि परिबो cost effectiveness obviously it is the first glide weapon to utilize state of the art low cost system india jaha bhi banaye low cost effective जिस गुडा को ही बनाए making high precision targets more economically sustainable. Okay, so as I said, it was designed and developed by Research Center Imarat, which is in Hyderabad. Okay, RCI Hyderabad aku develop karchi in collaboration with DRDO laboratories. Okay, এই জিনিসটা মনে রাখিব. The project involved development cum production partners. Okay, and Indian private industries which have already commenced production activity bolstering the domestic defense manufacturing system. माने खाली गोटे बने के छाड़ दिले नु ऑलरेडी प्रोडक्शन आरे चली छी बहुत ह्यूज नंबर रे ऑलरेडी माने जो माने प्रोडक्शन कंपनीज गुडा को से माने काम करछन आकू केमती अधिक नंबर रे प्रोड्यूस करा जिवो ए ताराटा को हैला तो तारा कोन एतकी हमें क्लियर हेलु. Okay, this development marks a major step in advancing India's strategic autonomy and reducing dependence on imported precision guided munitions. ए जिनसटा आमे इंपोर्ट करथुलु ए जो ग्लाइड वेपन हमर किछ न थिला हैला तो हमको जदी मनकर वर्षे तळे मते गोटे कन्वेंशनल वारहेड यूज करियार अछि जोटार के टारगेट सेट हे परिबोनी तो मु कोन करबी मु बाहर देशर ए जिनसटा को
डिपेंड करी बिकज मो पाखे गाइडेड वेपन सिस्टम किसी नथिला हैला जोटा कि एबे हो जाइए तो एगेन ये जगह भी आम आत्मनिर्भर भारत कथा इम्पोर्ट डिपेंडेंट कथा डिपेंडेंसी कमेवा कथा सब लिखिपर ओके मार्स नाउ दिस इज नॉट प्लैनेट मार्स ये जिनसटा भी प्रिलिम्स इंपोर्टेंट सुनते स्पेस रिलेटेड साइंस रिलेटेड जहाँ भी शॉर्ट फॉर्म्स गुड़ाक तार फुल फॉर्म गुड़ाक टे मन रखी दो जमी तारार आम मन रखिलु पूरा वर्ड बाय वर्ड कहीं चार्टा ऑप्शन देखला पर कंफ्यूज हो तुम ऑगमेंटेड थिला ना आर्टिफिशियल थिला है सेमती कंफ्यूजन हुए तो मार्स कौन मिथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम एटा कहार कौन किसी माने इज इट ए माने इनिशिएटिव टा कहार इज इट इनिशिएटिव ऑफ इसरो और नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मार्स कथा आम ये पढ़ुनु माने मार्स माने प्लानेट कथा पढ़ुनु आम ये मिथेन अलर्ट कथा पढ़ु तो यहाँ किए गोटे चल किए चल मुझे तुमको खाली ऑप्शंस देली इसरो नासा ये सब ऑप्शंस गुड़ाक देली किए थो भाव इसरो इंडिया पढ़ु तो इसरो ही ना सो द UN expanded its methane alert and response system to include the coal and waste sectors कौन तो नासा इसरो कथा कौन आसला ये मार्स बोला प्लानेट कथा पढ़ु कि प्लानेट कथा तो पढ़नु तो नासा इसरो कथा कौन आसला मिथेन कथा पढ़िलु है तो मिथेन राइट इंपोर्टेंट तो देख पूरा पढ़ले जान पार द डिसीजन फॉलो सैटेलाइट डाटा आइडेंटिफाइंग and Indian landfill among the world's 3 largest methane emitters. India रे गोटे landfill अच्छी कोठी कंज्यूमर्ग हैला जोरा को कि माने सैटेलाइट डाटा थ्रू रो जणा पड़ला कि दैट इज among the world's 3 largest methane emitters. तो मिथेन एमिशन हमको रोकिए माने कमाइबार अछि ना तो सबुठु लार्जेस्ट 3 नंबर भितर एटा आसिला along side the sites in चिली रे दीटा साइट्स अछि आउ इंडिया रे भी गोटे साइट अच्छी जो कि तुम अधिक मिथेन एमिशन देखा मिली रिसेंटली है कौटी से कंज्यूमर्ग सो इट इज द फर्स्ट ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम दैट मॉनिटर्स मिथेन एमिशंस है सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम मार्स टा कौन मिथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम से गोटे सैटेलाइट ता माने सैटेलाइट तो नो सैटेलाइट तो डाटा यूज करछ से सिस्टम ता डाटा यूज करके हमको कौन कहबो को जगह रु केते की मिथेन अधिक एमिट होची अलर्ट करबो हैला तो दैट मॉनिटर्स मिथेन सुपर एमिटर्स एंड कनेक्ट्स दैट डाटा टू रैपिड मिटिगेशन एफर्ट्स केमती ताको सॉल्व करि परिबा हमें इट इज अ कंपोनेंट ऑफ International Methane Emission Observatory which is under the UN Environmental Program. एटा पढ़थिबो UNEP कोन कोडी हेडक्वार्टर कोन तार सब कहलो UNEP चाइना UNDP सुनथिबो UNEP रो तो ये केबे लॉन्च होइतला ई सिस्टम टा आगो देखो COP27 एबे रिसेंटली को COP होइतला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैला किछ आईडिया अछि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कोन NDC इंडिया रो नेक्स्ट टार्गेट कौन एनडीसी रो वेरी इंपोर्टेंट है गुड़ाक है COP30 कोडी इतला रिसेंट इतला COP30 कोडी इतला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टार्टिंग के बेडू इतला एटा
एई वर्ष माने आ पूर्व वर्ष प्रिलिम्स रे क्वेश्चन पचार थिला तीनटा स्टेटमेंट देथिला एनडीसी रो फ्यूचर टारगेट ऊपर कि इंडिया रो वर्तमान केते से अचीव करि पारछि इंडिया वर्तमान फॉसिल फ्यूल कोन किछि किछि मन गुनी मु क्लास गुडा कर भी बहुत थर पढै छी इन 45% एटा 50% एति की अचीव करिछि एति की अचीव करिवार अछि ए परसेंटेज गुडा को इंपोर्टेंट हैला तो आज रे तमर काम हला ए जिंसटा हैला होमवर्क कॉप 30 रे कोन कोन सब डिसीजन निया आइथिला कोन कोआ जाइथिला इंडिया रो नेक्स्ट टारगेट सब कोन हैला कोठी आइथिला नेक्स्ट कोठी हबो सब जाने को पड़िबो एनडीसी कोन बाय द वे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ता माने प्रति नेशन रो किछि किछि कंट्रीब्यूशन रहिबा दरकार हमरो एनवायरनमेंट प्रति हैला आउ सेटा पूरा डिटरमाइंड भाबरे कि नाइ नेक्स्ट 5 वर्ष रे मु एटा को 50% रु जीरो करिबी माने करिबी फिर 5 वर्ष परे मु कहिबी कि मु करि पारली कि करि पारली नै कि केते की करि पारिबी हैला तो ए जिंसटा स्टार्ट हितला एनडीसी कोड स्टार्ट हितला पेरिस एग्रीमेंट 2015 हैला सेबेठु को आइतला प्रति 5 वर्ष रे प्रत्येक नेशन तांगर टारगेट्स देबे हैला किंतु एनडीसी ता जिंसटा हमर स्टार्ट हैला पेरिस एग्रीमेंट रे कुआ गला कि सब नेशन 5 वर्ष रे निज निजर टारगेट टाकू देबे केते मोर एनवायरनमेंट एते कमेबार अछि कि एमिशंस कमेबार अछि नेट जीरो हमर वर्तमान टारगेट अछि 2070 तो आको हमको आगुआ जहां भी हमें कमिट करूछु स्टैंड हबार अछि जोटा कि ऑलरेडी हमें वर्तमान करि सरछु किछरा जिंस हम ऑलरेडी अचीव कर सरछु जति कि हमें आ पूर्व टारगेट देथिलु हमें ऑलरेडी अचीव कर सरछु एबे हमर नेक्स्ट टारगेट अछि तो तमरो काम होला नेक्स्ट टारगेट्स केते मैं एबे कहली त मन भूल जियो आई एम श्योर तो तम काम होला टारगेट्स परसेंटेज वाइज सब मन रखियो मु जेबे भी नेक्स्ट पचारिबी एनडीसी रो टारगेट्स पार्टी रे रहिथिबार अछि हैला अच्छा सो ए जिंसटा मार्च केबे लॉन्च करा हितला कॉप 27 हैला तामने 3 वर्ष तळे and officially launched in January 2023 as I said 3 वर्ष तळे बे कॉप 30 हितला 3 वर्ष तळे कॉप 27 हितला January 2023 रे प्राइमरी गोल कोन अगेन सेम जिंस टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केते मिथेन एमिशंस होची को जगह रु ओके सेटा से आइडेंटिफाई करबो आउ गवर्नमेंट को नोटिफाई भी करबो कि तमरो ए जगह रु एथि की मिथेन एमिट होची तमे किछ ओटे करो कि हम हेल्प करबो तमरो किछ ओटे करिया रे आउ ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द मिटिगेशन एक्शन से माने कोन करूछंती कि नै गवर्नमेंट कोन करूछि कि नै तारो प्रोग्रेस टाको भी पूरा ट्रैकिंग करा जिवो एबे जिम एटा जाना पड़ला कि एटा होछि वर्ल्ड रो 3 नंबर रे अछि टॉप 3 रे तो आरो फिर एटा पूरा एबे टारगेट रहइबो कि गवर्नमेंट कोन एक्शन नोछि मिथेन एमिशन कमे पे आ पूरा तार प्रोग्रेस टाको ट्रैक करिवो एंड दिस इज ऑल अंडर योर मार्क्स सिस्टम हला ओके तो ये सब कौन पे कर होची ग्लोबल वार्मिंग ताको स्लो डाउन करिया पे ऑब्वियसली द सिस्टम ऑपरेट्स थ्रू ए 4 स्टेप लाइफ साइकिल प्रथम हला डिटेक्शन एंड एट्रिब्यूशन नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट मिटिगेशन एक्शन एंड ट्रैकिंग एंड वेरिफिकेशन हला तो प्रथम कोन डिटेक्ट करिवो तापरे नोटिफाई करिवो गवर्नमेंट को कोन करा जिवो IMO team directly alerts the governments हैला तापरे मिटिगेशन माने कोन रेस्पॉन्स गवर्नमेंट नोची कोन आमे ताको सॉल्व करछु से जिंस गुडा को से दबो इवन से ए मार्क्स पार्टनर प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एज नीडेड जदी हमको किछि टेक्निकल असिस्टेंस भी दरकार कमेबा पे मार्क्स सेटा प्रोवाइड भी करिवो ओके से खाली देखिबनी कि नै आमे खाली जेतु यूनाइटेड नेशंस बेस्ड तो आमे यूनाइटेड नेशंस कंट्रीज मानको ही नै कि चलिबो नै एटा एंटायरली सम माने पूरा हमरो अर्थ पे एटा हैला अच्छा तापरे जहां भी तमरो डाटा गुडा को आसीबो सेटा को से पब्लिश भी करे गोटे प्लेटफॉर्म रे ताको से प्लेटफॉर्म रो ना हला आई ऑन मिथेन हैला सो एटा कहार प्लेटफॉर्म बेसिकली ई मार्क्स रो प्लेटफॉर्म आई ऑन मिथेन जो थरे कि तमरो ऑल ओवर वर्ल्ड रे कोठी केते मिथेन एमिशन होची सब डाटा तुमको मिल परिबो हैला ए प्लेटफॉर्म रे so originally focused on oil and gas the system now covers
कोल माइन्स एंड वेस्ट फैसिलिटी। तो आगुरु कोन ऑयल गैस इंडस्ट्रीज गुडा को ऊपर फोकस करथला, एबे से कोल माइन ऊपर और वेस्ट फैसिलिटी ऊपर भी फोकस करूची। सेटा ही हमरो फर्स्ट जो न्यूज़ ता थिला मु तुमको फर्स्ट कहली हैला टू इंक्लूड कोल एंड वेस्ट सेक्टर। तो आगुरु ऑयल एंड गैस सेक्टर को ही इंक्लूड करथला, एबे कोल इंडस्ट्रीज वेस्ट इंडस्ट्री रो भी केते की मिथेन बाहर कोन से सब डाटा भी से नबो हैला थ्रू सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। तो माने मैनुअली जाई कि नबो कि नहीं, सैटेलाइट बेस्ड डाटा गुडा को से नबो। इट यूजेस कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल, एआई भी यूज करछि सेटा माने ओके, टू एनालाइज थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट इमेजेस। केते सैटेलाइट अछि हमरो स्पेस रे 17,000 टा सैटेलाइट्स, तो केते डाटा आस्थो से डाटा को सब हमको सेग्रीगेट भी तो करियर अछि, तो से जगह रे हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करे। ऑल डिटेक्शन डाटा इज मेड पब्लिक 30 to 45 days after an event to ensure accountability while allowing time for industry response हैला। गोटे जगह रे जदी एति की बाहरिला देन 30 ରୁ 45 दिन भितरे से डाटा तमरो पब्लिक भी करा जिवो ओके। ग्लोबल databases, it includes tool like coal methane database covering over half of the world's metallurgical coal production। तो ये database रू भी से डाटा निए हैला, बिकॉज एबे से नबो ही माने बाध्य, बिकॉज एबे कोल माइन ए सब जिंस गुडा को से इंक्लूड कला, तो तार डाटा गुडा को से पाइबो कोठू कोल मिथेन डाटाबेस रू डाटा गुडा को पाइबो हैला। अच्छा इट यूजेस द एटा को टेक्निकल जिंस गुडा को हम एते भीतर को जीवा नै, मेन तमे जानथे बार अछि मार्क्स कोन किछटा स्टेटमेंट आसीबो ता रिगार्डिंग टिके हमको माने कॉमन सेंस भी किछ जगह यूज करे अछि ओके। इट इज नाउ कौन पाई सब करा होची, ऑब्वियसली मिथेन इज 80 times more powerful than कार्बन डाइऑक्साइड ओके ओवर ए 20-year period जदि हमें देखिबा। सो रैपिडली प्लगिंग लीक्स इज द फास्टेस्ट ब्रेक ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक अछि एटा ए न्यूज़टा एटा हम लास्ट प्रीलिम्स पूर्व भी जिनसटा कहिथिली। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट गोटे बना जाइछि, बनैबार प्रपोजल अछि 70,000 crore रो प्रोजेक्ट हैला, एंटायरली तमरो निकोबार आइलैंड को कवर परिवार एटा अछि। माने एबे जिनते तमे एबे देखुछ ना निकोबार आइलैंड एमती अछि, केते सुंदर ग्रीन अछि, पीसफुल अछि, नो पहाड़ पर्वत ए सब अछि, सब कटा हे जिवो, ए सब गछ कटा हे जिवो हैला, कटा हे कि एठी सब इंडस्ट्रीज पोर्ट ए सब माने बहुत सारा जिंस एठी एस्टैब्लिश करिवार। नो डाउट से जिंस गुडा को हेल्प हमें एबे डेवलपमेंट करियर अछि, माने हमें किछ ना किछ तो करिया को पड़िबो ना, गछ पछ काटिया को पड़िबो, बट जो जगह रे कटा होची हैला 70,000 नहीं 92,000 crore रो प्रोजेक्ट एटा हैला, ता माने केते बड़ प्रोजेक्ट पूरा ग्रेट निकोबार रो तमरो कना माने नक्शा ही चेंज कर दो भाई प्रोजेक्ट। तो आपको नहीं कि वर्ष हेलानी डिस्कशन चलछि हैला, तो निहाती इंपोर्टेंट आपको इवन आ बेसिस रे तमरो क्वेश्चन भी पकाई थिला लास्ट प्रीलिम्स रे ग्रेट निकोबार को नहीं। तो लोकेशन वाइज भी बहुत इंपोर्टेंट हैला, ग्रेट निकोबार रे को आइलैंड सब अछि, कोठी कोन अछि से सब जिंस, ता छोड़ा भी कौन कौन अपडेट्स आसी ए प्रोजेक्ट रो कौन कौन अपडेट्स हमें पाउछ सब नोट डाउन करिया को पड़िबो, बिकॉज़ डेली किछ ना किछ न्यूज़ आसु ए प्रोजेक्ट पर हैला। सो एटा होची तमरो मैपिंग बेसिकली। कैंपबेल सुनछ, कैंपबेल बे एटा हला तमरो अंडमान निकोबार कहूछ, अंडमान टा कोठी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान हैला। निकोबार टा एक्चुअली कोठी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मु जते बळे कहूची दिस इज टुवर्ड द सदर्न मोस्ट पॉइंट हैला, साउथ को रहला हमर ग्रेट निकोबार टा। अच्छा ता ऊपरे एबे तमरो प्लानिंग अछि कि गोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हबो हैला, एडी देखो गोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ए सब तमरो ए जगह रे बनेबार पूरा प्लानिंग अछि हैला। टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट ए टोटल जिनसटा को डेवलप करा हबो। नाउ दिस इज अ वेरी
माने कौन बायोडाइवर्सिटी इंपोर्टेंट बायोडाइवर्सिकल जोन एटा है बहुत गछ बहुत तुम माने हॉटस्पॉट तो निहाती एटा गोटे तो बहुत क्रिएचर्स गुड़ाक भी अच्छा तो से लाइफ माने कौन हैबिटेट को आम डिस्टर्ब करवा तो एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स तो रोची रोची सेठी जो लोक मैंने अच्छा लोक मैंने किए लोक मैंने ट्राइब्स है अंडमान निकोबार ट्राइब्स तो से जी से तो बहुत जगह छाड़ी से कुआड़े भी जावाक राजी हमें तो यहाँ बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जदि ये अचीव हो जाए तो निहाती भल हम कि ओके बट बहुत चैलेंजिंग अच्छी है एंड तुम कौन कौन ना कांग्रेस किए से राहुल गांधी से भी एबे जाइथिले सेठी से सब न्यूज रे थिला हैला सो द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज one of the most ambitious and most contested infrastructure proposals हैला 2020-21 रे अनाउंस करा जाइथिला ए पर्यंत हेई नै तुम भाबो माने केते चैलेंजेस ताको फेस करिया को पड़िथिबो 5 वर्ष 6 वर्ष हे गेलानी by नीति आयोग and led by the Andaman Nicobar Island Integrated Development Corporation. Okay, the 72,000 crore plus plan, I think सर थिला से तो बड़े, एबे 92,000 नहीं गला ना, कोई लिखा है थी वो. 92,000 जितना बड़े मैंने फर्स्ट लॉन्च ही थिला 2021 रे सेता बड़े इट वाज 72,000 crore. एबे सेटा बड़ी बड़ी की 92,000 crore प्रोजेक्ट ही सरलाने ऑलरेडी. Hela 70,000 plus crore will transform the country's southernmost inhabited island into a strategic economic and tourism hub. Okay, पूरा नक्शा चेंज कर दो. Supporters see it as a geo-economic counterweight to China's Indo-Pacific projection. Critics see it as an ecological and human right disaster. है तो सपोर्टर भी अच्छे तुमको से जदि मेन्स रे पचारि गला क्वेश्चन देन हमको प्लस पॉइंट्स भी लिखार अच्छे नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखार अच्छे तो नेगेटिव रे आम आर क्रिटिसिजम्स गुड़ाक निहाती जानथिबा दरकार मुझे कहली कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम हम निहाती जेहेतु ये गोटे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया आउ तुम ट्राइब्स मान को डिस्टर्ब हम तो ह्यूमन राइट डिजास्टर है ये दीटा है तार कनसर्न्स बट जदि भी हो जाए देन ऑब्वियसली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एटा गोटे करा जाउछि तो तार भी अच्छी एंड एबे एटा भी कहा जाय कि जेतिकी ट्री कटा हबो सेतिकी ट्री तुम आउट को जगह रे प्लांट भी करा हबो हैला तो गवर्नमेंट भी ता हिसाब रे स्टेप्स भी नउछि तो ए जिंसटा को हमको लिखिया को पड़िबो जदि भी कटा होछि आमे खाली नहीं कटा होछि कटा जदि भी कटा होछि मनकर 100टा गछ कटा हला से 100टा गछ जाय कि आउट को जगह रे तुमरो प्लांटेशन करा हबो सेटा भी गवर्नमेंट कहिछि सो ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप तो एटा होछि बेसिकली गोटे आइलैंड एटा होछि सब कोन बहुत सारा आइलैंड अच्छे आम से रीजन रे से भीतर यहाँ गोटे आइलैंड बस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हबार अच्छी कौटी ग्रेट निकोबार नॉट इन अंडमान नॉट इन साउथ अंडमान कौटी नहीं ग्रेट निकोबार को जब आम एक्सटेंड करवा यहाँ आम पाइबा इंदिरा पॉइंट जो तुम कौच सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट दैट इज इन ग्रेट निकोबार है पूरा सदर्न साउथ रे आम टिप जब आम कह ऊपर पूरा कौन सब टॉप रे गोटे कौन नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कोटा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट एटा हला सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो दिस लाइज इन द ग्रेट निकोबार कवरिंग 910 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओके एटा ह्यूज माने 1000 स्क्वायर किलोमीटर माने तुम भाबतो Indira Point on the island is India's southernmost point, only 90 nautical miles from the Sabang in Sumatra, Indonesia. तो से तले तले हमरा कोन इंडोनेशिया ए सब अछि हला तो ताठो केते दूर एटा से जिनसरा लिखा है. The island hosts 2 national park. मन रखिबो हला से आइलैंड रे दीटा नेशनल पार्क अछि. Campbell Bay National Park, where is this Campbell Bay? I showed you. आउ गालाथिया बे नेशनल पार्क है तो एटा हमको लोकेशन बेस्ड जो मु कहूची ए जिनस गोटा को मन रखा पड़ो. कैंपबेल बे नेशनल पार्क टा कोठी अंडमान रे ना कोटीटा ग्रेट निकोबार रे तो ग्रेट निकोबार रे ए दीटा नेशनल पार्क आम रहा
এই ন্যাশনাল পার্क गुड़ाक जो देख युवा सब आम साउथ अंडमान नॉर्थ अंडमान ये सब रहा है ऊपर को तो जदि भी एमती पचार कि अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कि साउथ टू नॉर्थ नेशनल पार्क केमती कौन कर जेहेतु ग्रेट निकोबार वर्ष है न्यूज अच्छी से कहूँ सैडल पिक नेशनल पार्क शुणुथ बहुत पॉपुलर ता तलू रहा मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क नॉर्थ बटन आइलैंड ये सब साउथ बटन मिडिल पर नॉर्थ तापर साउथ रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क कोठी अच्छी है माउंट हैरियट नेशनल पार्क एंड दिस इज योर डंकन पैसेज लिटिल अंडमान आउ साउथ अंडमान भितर तुम डंकन पैसेज अच्छी 10 डिग्री चैनल क्या कंडक्ट माने कनेक्ट करे अंडमान को आउ निकोबार है तो 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल क्या कनेक्ट करे 8 डिग्री चैनल क्या कनेक्ट करे कौन मुंड हल चौन आंसर को मिनी कोई आउ लक्षद्वीप कोटा 9 डिग्री कोटा मिनी कोई मालदीव्स आउ 8 डिग्री कौन कह चुपचाप बसल कौन अरे ये तो तुम स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स भी नहीं स्टैटिक जीके 10 डिग्री चैनल ये लिखा है तुम अंडमान निकोबार को सेपरेट कला 9 डिग्री 8 डिग्री क्या मिनी कोई मालदीव्स से तो लिखी एटा 8 डिग्री की मिनी कोईटा कोठी अच्छी लक्षद्वीप आउ 9 डिग्री टा जेतिकी भी ये सब 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री आउ जेतिकी भी तुम स्ट्रेट्स गुड़ाक अच्छी है कोटा कोटा एबे तो ये सब जिन चर्चा रे अच्छी ना पूरा अटलांटिक ओशन वर्तमान चर्चा रे अच्छी पैसिफिक ओशन चर्चा रे अच्छी तो जो स्ट्रेट्स गुड़ाक तुम गोटे कनेक्ट करे कैस्पियन सी कोठी अच्छी एतिक जिनस गुड़ाक बेसिक जिनस पढ़ी के जावा कथा प्रिलिम्स रे जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है को स्टेट क्या कनेक्ट करुच्ची ए डिग्रीज गुड़ा क्या कनेक्ट करुच्ची करो बाहर करो तमें अच्छा तो यहाँ है 10 डिग्री चैनल तुम अंडमान निकोबार को कनेक्ट कला तो आम पढ़लु कैम्पबेल नेशनल पार्क गैलाथिया बे नेशनल पार्क इज इन निकोबार ओके कैम्पबेल नेशनल पार्क गैलाथिया नेशनल पार्क एंड द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एटा थिला तमरो गोटे स्टेटमेंट लास्ट ईयर क्वेश्चन ओएस रो ग्रेट निकोबार गोटे बायोस्फीयर रिजर्व की नहीं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की नहीं एमती कौन गोटे थिला से भीतर गोटे स्टेटमेंट थिला ग्रेट निकोबार इज अ बायोस्फीयर रिजर्व बहुत पिला नो मार्क आछन कि ग्रेट निकोबार इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व टोटल आम पाखरे वर्तमान केतेटा बायोस्फीयर रिजर्व अछि श्योर 13 6 लेवल तो 19 हो जाउछ मे बी हाँ 13 टा कौन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम अंडर 13टा बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी टोटल आम पाखे 18टा बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी एटा भी गोटे स्टेटमेंट बोधे थिला से एग्जाम ओएस
से भितर ग्रेट निकोबार आमर अच्छी कि नहीं, सुंदरबन अच्छी कि नहीं, तो टोटल आमर मुझे ना जियोग्राफिक मैपटा ही इंपोर्टेंट। मैप रे तुमको देखियार अछि बायोस्फीयर रिजर्व कोठी कोन सब अच्छी हैला। अच्छा, designated under the UNESCO's Man and the Biosphere program. So Great Nicobar is under this Man and Biosphere program. तो टोटल 18टा बायोस्फीयर रिजर्व रु 13टा बायोस्फीयर रिजर्व तमरो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम अंडर रे अछि। सेई 13टा भितरु ग्रेट निकोबार भी गोटे हला। इट इज होम टू शॉम्पेन। शॉम्पेन इज अगेन पीबीटीजी हला। पीबीटीजी कहली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अंडमान रे भी अछंती, निकोबार रे भी अछंती ट्राइब्स माने थिबे। निकोबार रे को ट्राइब अछंती पीबीटीजी? शॉम्पेन ट्राइब रो ना हला शॉम्पेन। जेमति हम एबे बाइगा ट्राइब पढिलु, बाइगा ट्राइब गोटे होची पीबीटीजी, शॉम्पेन भी गोटे पीबीटीजी। एंड निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटीज भी सेठी अछंती, प्लस ए फ्यू थाउजेंड नॉन ट्राइबल सेटलर्स हैला। तो बहुत लोक माने भी अछंती, तो तांको भी लोक माने तांकर लोकेशन टाको भी हमको चेंज करिया को पड़िबो जदि हमें ए प्रोजेक्ट सेठी करूछु। सो दिस इज बेसिक माने लोकेशन सिग्न आ तमरो ग्रेट निकोबार कोठी कोन बायोस्फीयर की नहीं, if biosphere if it is under this man and biosphere program or not, ए सब जिंस गुडा को इंपोर्टेंट हैला। तुमको डायरेक्ट पचारिबने कि कोन पे न्यूज रथिला कि केते टंगार प्रोजेक्ट 72,000 हो, 80,000 हो, 92,000 हो, पचारिबने से तुमको एटा पचारिबो हैला। ग्रेट निकोबार सिट्स astride the mouth of the state of Malacca, through which roughly 30% of global maritime trade. Now एटा भी एबे जदि हमें देखिया ए जिनसटा भी न्यूज रे अछि कि नहीं, मेरीटाइम ट्रेड टा वर्तमान स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाइछि हैला। तो मेरीटाइम ट्रेड भी न्यूज रे अछि, तो मे बी एटा भी पचारिबो तुमको सेटा कोउटा को कोउटा कनेक्ट करछि, स्टेट ऑफ मल्लका कहा को कनेक्ट करछि। मे बे तुमको कहली ए सब स्टेट्स गुडा मन रखिबो हैला। एंड 60% of India's trade pass through this. The island is closer to Bangkok and Jakarta than to mainland China. तो mainland China को mainland India, India to जदि हमें कंपेयर करिबा, इट इज क्लोजर टू बैंकॉक एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ता पाखरी अछि। कंबाइंड विथ कार निकोबार एंड कैम्पबेल बे, इट एंकर्स द अंडमान एंड निकोबार कमांड, इंडियाज ओनली ट्राई सर्विसेज कमांड। कोटी कोटी ए पाखरे ही तमरो ता माने कार निकोबार आ कैम्पबेल ए रीजन रे ही तमरो ट्राई सर्विस कमांड भी अछंती, जे के हमको प्रोटेक्ट करके अछंती हला। ओके, द बेसिक जिनस गुडा थिला। सो प्रोजेक्ट विषय टिके देखिया, मैं तुमको कहली चारिटा कंपोनेंट्स अछि हला। गोटे हला तमरो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना हबार अछि। आ मु कहि दुछि कोन कोन बनेबार अछि। एटा गोटे हला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल से फिगर रे भी देखिलो तुमे, एटी जो देखैथिले ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एटा गोटे बनेबो। ता छड़ा कोटे सेटा बनेबो बाय द वे प्रपोज्ड एट गलाथेबे। वेयर इज दैट गलाथेबे? फिगर रो तुम अगेन बारंबार माने मेमोराइज करिया पड़िबो। गलाथेबे कोठी? गलाथेबे नेशनल पार्क भी एटा हला, इंदिरा पॉइंट पाखरे ही अछि गलाथेबे। ओके हां ठीक अछि। फर्स्ट देखि देबा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल हबो। आ गोटे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हबार अछि। टाउनशिप प्रोजेक्ट गोटे हबार अछि हला। आउ पावर प्लांट ए चारटे जिंस हबार अछि बेसिकली हला। ए चारटे जिंस पय 92,000 करोड़ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रखा जाइछि। सो प्रथमे जदि हम देखिबा आईसीटीटी गलाथेबे रे प्रपोज करा हिछि, व्हिच इज इन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर, डिजाइन्ड एज ए 16 million TEU transshipment hub, aims to capture traffic currently handled by Colombo, Singapore and Klang। जेहेतु स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी से माने रोचे ना कि सब आडू तमरो कंट्रीज गुडा को सहित माने कनेक्टिंग हब हे परिबो। एबे जेंति स्टेट ऑफ हॉर्मस टा अछि गोटे बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैला, जोटा को कि मिसयूज करूची ईरान व्हाटएवर। तो ए सब को जदि हमें कनेक्ट करि पारिलु, देन ऑब्वियसली हमें हमरो जो मैरीटाइम ट्रेड टा बहुत परिमाण रे इंप्रूव हबो। ओके, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग अगेंस्ट कोलंबो
which itself handles roughly 50% of India's transshipment cargo, is central to the project's commercial case. है तो वर्तमान कंपिटिटर किए कोलंबो है तो तार एटा भी गोटे ग्रेट कंपटीशन हम जदि हुए तो से कंपटीशन हम न हम आमको लोकेशन आउ कौन कौन हबार अच्छी से जानियार अच्छी. नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डुअल सिविलियन मिलिटरी यूज है सिविल यूज पे भी हम मिलिटरी यूज पे भी हम दैट इज इम्पोर्टेंट है ना. तो आमको डर भी रोचे कि आमको पानी आड़ू भी बहुत अटैक हो पारे बिकज दैट इज द इजीएस्ट आम कह बिकज आम कौन करूँ आमर बाउंड्री मेजर पोर्शन ऑफ आवर बाउंड्री इज शेयर्ड इन वाटर है ना. तो इधर पाकिस्तान आड़ू आसपारे सेपट जदि न आसपारे एपटू ही आसवाक चेष्टा करेंगे एनिमीज. तो से इट इज वेरी इंपोर्टेंट आम आमर प्रॉपर बेस सेटअप्स गुड़ाक से सब जगह करवा है. तो डुअल सिविलियन मिलिटरी यूज हो से एयरपोर्ट रो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एटा भी क्वेश्चन पचार ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोठी प्रपोज करा जायछि हला. पीक आवर कैपेसिटी 4000 पैसेंजर्स छड़ा. रनवे लेंथ एंड फैसिलिटी डिजाइन्ड टू हैंडल लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक मिलिटरी एसेट्स. टाउनशिप प्रोजेक्ट हम जो थे कि लोक मैंने रे प्लान्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कमर्शियल एरियाज एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज से गोटे कौन जंगलटा पूरा आमको कन्वर्ट कर गोटे टाउनशिप को है. टारगेट पॉपुलेशन इज 6.5 लाख ओवर ए जनरेशन. A dramatic change for an island that currently has fewer than 10,000 residents. वर्तमान जदि आम देखा 10,000 रेसिडेंट अच्छा बट टार्गेट कौन अच्छी जदि ये सब है 6.5 लाख प्लस जापर. पावर प्लांट भी गोटे सेटअप हबार अच्छी गैस एंड सोलर बेस्ड हाइब्रिड पावर जनरेशन. ओके प्लांट कैपेसिटी अराउंड 450 मेगावाट टू सपोर्ट ऑल अदर कंपोनेंट्स. तो ये चार्ट जिनस बनवार अच्छी. Niti Aayog highlighted strategic potential of the island in a report that triggered the project. Galathea Bay, जोटा कि proposed site for the terminal, ICTT and power plant, is officially uninhabited. Okay, located in the southeastern corner. Environmental clearance मिलवा बहुत कष्ट सेटा भी ताको गोटे चैलेंज. Environmental clearance and in principle forest clearance were granted in October 22. ता पे भी गोटे केस ऑलरेडी सेटा मैं पढ़ी गोटे क्लास रे भी. ए डिटेल्ड डीपीआर हैज बीन प्रिपेयर्ड एक्सपर्ट एक्सप्रेशल कमिटी प्रोजेक्ट रिव्यू करछि सब भलो 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 सब हेछि. बट जदि आमे रिसेंट अपडेट्स तार देखिबा कौन कौन माने लेटेस्ट डेवलपमेंट हेछि प्रोजेक्ट रे 2020-21 रो एटा प्रपोज करा हेछि हैला एंड दिस इज 2026 खबर थिले एबे कोई एथा ना काहे हे पारु नाही. तो एनजीटी कमिटी रिपोर्ट लार्जली अपहेल्ड एनवायरमेंटल क्लियरेंस विथ कंडीशंस बट द कंट्रोवर्सी रिमेन्स लाइव. ए पर्यंत भी कंट्रोवर्सी अछि. एनजीटी तारो क्लियरेंस दे देछि बट हेथे किछि गोटे गफ ना गोलमाल अछि हैला कि जो मैंने भी सिटी अच्छे दे आर नॉट एग्रीइंग ये सब बनवा पे बट स्टिल हम किसी गोटे करके हाँ पास कर दिया जाइए जोटा को पॉइंट आउट करते राहुल गांधी. ओके स्टैंडिंग कमिटी हियरिंग्स कंटिन्यूड टू फ्लैग कंसल्टेशन एंड इकोलॉजिकल इश्यूज. Civil society and former bureaucrats have written to the president and PM asking for a pause. है बिकज जदि एमती होची देन माने बायोडाइवर्सिटी लॉस आम देखा पाई पारिबु. इकोनॉमिक सॉरी माने एनवायरमेंटली गोटे ह्यूज लॉस हो पारे. दैट इज द मेन कंसर्न बेसिकली. कंस्ट्रक्शन फीस टेंडर्स हैव बीन फ्लोटेड इन 2024. शॉम्पेन वोटिंग शॉम्पेन कहली ट्राइब रो ना. ओके शॉम्पेन वोटिंग इन 2024 लोकसभा इलेक्शन 7 शॉम्पेन ट्राइबल्स voted for the first time ever, drawing global attention to the tribal rights debate. प्रथम थर पई से माने वोट करले माने भाबो केरे बड़ कथा एटा हला. Cyclone impacts in Bay of Bengal, cyclone Rimal and others have added climate risk concerns. Climate risk concerns भी हे परिबो. And it को जे की ए प्रोजेक्ट लीड करूची अपडेटेड डीपीआर जोटा आसी that partially addresses mitigation but critics remain unconvinced. जो माने भी
क्रिटिसाइज करछन्ती से माने ए पर्यंत कन्विंस हे परनांती कि तमे से लोक मान को नै कि रखबे कोठी बिकॉज़ से लोक माने तो बाहर को लोक मान को सहित एते मिसी के रखिया पे केबे भी राजी हेबेनी तो ए सब कंसर्न्स गुडा हमको देखिया को मिलु छी प्रोजेक्ट हला आछड़ा बहुत जिंस अछि प्रोजेक्ट जते बळे पीडीएफ टा पाइबो हला एटा पूरा मु कहली जो एनजीटी कथा कहली हला 2023 रे से गोटे हाई पावर कमिटी सेटअप कला ये हला ए जिंसटा हम ऑलरेडी गोटे क्लास रे कवर अप कर सारथिलु 6 मास तळे हला ता माने एटा वर्ष हेला न्यूज रे अछि जिंसटा ने पर्यंत सॉल्व हे पारनी तो काइंडली पढी दबो तो क्लाइमेट इंपैक्ट्स कोन हे परिबो हला कहली कि सिस्मिक एंड सुनामी वल्नरेबिलिटी भी रहउची से एरिया रे सब जिंस अछि माने कोन कोन असुविधा तमर अछि प्लस एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट कोरल रीफ आमे बहुत देखिया पाउ से जगह रे सेटा भी डिस्ट्रक्शन हे जिवो गलत बे रे जदि आमे टर्मिनल सिटी किछि उडे बनौछ तो एमिति बहुत कथा अछि हैला थ्रेट टू लेदर बैक टर्टल्स जो माने सेटा छन अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग एग्रीगेशंस ऑकर्स ऑन गालाथा बे बीचेस ओके लॉस ऑफ गालाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिनोटिफाइड टू अलाउ कंस्ट्रक्शन गालाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जेतु अछि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमरा कंस्ट्रक्शन मना सेटा केन करिवो तो ये सब चैलेंजेस रहउची इंपैक्ट ऑन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल निकोबार मैक कोकोनट क्रैब हॉक्सबॉल टर्टल पॉपुलेशन ए माने सब माने बहुत ही रेयर स्पीसीज गुडा को से जगह में देखिया को पाउछ नियरली 8.5 लाख टू 10 लाख ट्रीज इज नॉट अ जोक 10 लाख ट्रीज to be felt माने कटा जिबार अछि across approximately 130 square kilometer of primary rain forest तो नो डाउट गवर्नमेंट कहूजी कि 10 लाख ट्री कोठी से प्लांटेशन करिवो बट से माने अच्छी टाइम आरे से जिंसटा हैला सो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड रो गोटे ट्राइबल काउंसिल अछि से माने भी आकू क्लियरेंस वर्तमान पर्यंत देई पारनांती ओके एंड जति देखो समस्त ओपन लेटर्स तमरो लिखि चंदी जति भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट अछंती फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन अछंती जो माने से जगह रे भी रहि के आस्थिबे से माने भी कहि चंदी कि एमति कले बहुत असुविधा हे पारे इवन दिस प्रोजेक्ट कुड कॉज जेनोसाइड ऑफ द सोम्पेन हैला जो से ट्राइब मान कर जेनोसाइड भी हे पारे जदी एटा हुए बुझ परछो तो सेति पे कहली दिस इज ए माने इंपोर्टेंट टॉपिक हैला आकु जमा भी हमें इग्नोर करेगी जीवा कथा न ए सब जिन सम तुम कहली सोम्पेन पीबीटीजी अच्छा जे पढी दो केते जिंस अछि एतरे अच्छा एटा उडा इंपोर्टेंट इंडिया टू होस्ट फर्स्ट बिग कैट समिट इन जून ओके बिग कैट माने हम का बुझिया मात्र 1 hour 15 minutes 95 countries set to participate okay देखो so recently India announced that it will host the first international big cat alliance हैला summit कोठी न्यू दिल्ली रे 1st 2nd June रे हबा को जाउची the summit is expected to adopt the Delhi declaration the first global declaration on big cat conservation because seman kor numbers reduce होची नो डाउट बढ़ुची भी हमरो इंडिया रे तो टिके ठीक अछि बट जदि हम ग्लोबली देखिबा देन टिके कमिउची टाइगर पॉपुलेशन भी तमे देखो इंडिया रे बढ़ीची जदि हम लास्ट 10 वर्ष रो पॉपुलेशन तमे देखिबो टाइगर रो बढ़ीची बट ग्लोबली देखले कमिची So aimed at promoting shared priorities, transboundary cooperation and a landscape-based approach for protecting big cats and their habitats. Theme कौन रहिबो? पचार दबो Save big cats, save humanity, save ecosystem. This is going to be the theme of first big cat summit, which is going to be in Delhi. Okay, so IBCA International Big Cat Alliance केबे लॉन्च हेतिला बहुत रिसेंटली लॉन्च हेतिला 2023 रे ओके ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर केबे स्टार्ट हेतिला 2000 कौन 17 प्रोजेक्ट टाइगर
ଏଠି ଲେଖିଲା 50 years anniversary of Project Tiger। बारंबार कही प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एनिमल इयर्स 2023 रे 50 वर्ष है तो माइनस कर। अरे प्रोजेक्ट टाइगर केबे हितला होई परनो? इंटरनेशनल टाइगर डे केबे सेलिब्रेट करो? केबे ऑब्जर्व करो? 73 रे हिसाब कलो बदे 23 इयर्स याडे आ बेटा केते वर्ष होला? श्योर 73 हो। प्रोजेक्ट लायन केबे? प्रोजेक्ट लायन केबे? प्रोजेक्ट एलिफेंट केबे? मैथ्स दा फॉलोइंग रे पचार दबो कहिछि बहुत थोर क्लास रे कहिछि। लायन एलिफेंट रो सो 1973 हला तमरो प्रोजेक्ट टाइगर हला बहुत पुराना। तापरे प्रोजेक्ट लायन रिसेंट 2000 एलिफेंट 1992 हला मासटा इंपोर्टेंट नुह बट ईयर टा इज वेरी इंपोर्टेंट। तो ठीक है हाँ सेटा भी ठीक कथा। तो मंथटा भी बेले पचारि पर ठीक। तो 1973 रे हमरो प्रोजेक्ट टाइगर हितला तार 50th एनिवर्सरी रे लॉन्च हितला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड वाज फॉर्मली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2024। केशवानंद भारती केस कोड वासला इटी implementation IBCA was established through the NTCA National Tiger Conservation Authority which is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It functions as a global platform to share conservation expertise, fund conservation initiatives and create a repository. So overall it is कौन पे थिला conservation पे right तांगर population को केमते हमें conserve तो करिया plus increase भी करिवार थिला। So the initiative's main objective is conservation of 7 major big cat species. किए से अंडर रे बिग कैट अंडर रे टाइगर भी रहे, लायन भी रहेला, लियोपार्ड भी रहेला, स्नो लियोपार्ड भी गोटे कैटेगरी, चीता, जैगुआर एंड पुमा। ओके अच्छा जदी एटा देखिबो देखो सातटा कैटेगरी मु तुम सातटा स्पीसीज ए भितर रहले टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, पुमा, जैगुआर, चीता प्लस समस्तंकर आईयूसीएन रेड लिस्ट भी मन रखिबो बिकॉज सेम नुह है टाइगर IUCN रेड लिस्ट दे आर अंडर द एंडेंजर्ड, लायन वल्नरेबल, लियोपार्ड वल्नरेबल, स्नो लियोपार्ड वल्नरेबल बट पुमास दे आर लीस्ट कंसर्न आउ जैगुआर्स दे आर नियर थ्रेटेन है एटा टिके अलगा अछि एटा टिके अलगा अछि अदरवाइज वल्नरेबल आ गोटे हमर एंडेंजर्ड होछि दैट इज टाइगर है एटा तो पचारुची जानछ तुम माने तो साइंटिफिक नेम छाड़ो बट IUCN रेड लिस्ट इज इंपोर्टेंट प्लस स्कोप साइड्स रो अपेंडिक्स 1 रे प्राय सब आसनते ए गोटे तमरो अपेंडिक्स 2 रे रह गला हुमाटा। अच्छा तो एठी तमरो जो पचार थिली प्रोजेक्ट टाइगर 1973 प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड भी गोटे अछि 2009 आ प्रोजेक्ट चीता भी अलगा अछि 2022। ओके आ एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट माने एशियाटिक लायंस को हमें इंडिया रीइंट्रोड्यूस करथिलु दैट वाज इन 2004। ए सब ईयर गुडा मन रख चीता रो साइंटिफिक नेम टिके अलगा अछि
एसिनोनिक्स जुबाटस ओके जैगुआर्स रो पैंथेरा ओनका प्रायतः सब पैंथेरा पुमा रो पुमा कॉनकलर ओके अच्छा तो ए सातटा मेजर स्पीसीज हमर रहंदी IBCA it currently has 24 member countries okay 5 observer countries किए कजाकिस्तान नामीबिया थाईलैंड इक्वेडर एंड वियतनाम ये माने observer countries and several range countries that encompass the natural habitats of the जोठी big cats माने तमे देखिया को पाओ they are under this माने ये member माने को list रे अछन दिसे माने all the United Nations member countries are eligible to become the members of IBCA एटा उडे को एग्जाम रे स्टेटमेंट पचर देथिला are all United Nations member country eligible to become माने member of IBCA yes or no एमती कोन उडे थिला माने obviously correct statement find out कर so they are eligible हैला need for IBCA कोन दरकार थिला what was the need obviously big cats are under threat due to habitat loss poaching climate change and human wildlife conflicts okay conservation at a global scale मु कहली इंडिया रो वर्तमान ठीक ठाक ही अछि बट ग्लोबली जदि देखिबा कंजर्वेशन दरकार is required to halt the population decline and reverse the negative trends okay so India has committed 2028 पर्यंत 150 कोटी टका कमिट करछि in support to the IBCA and is exploring additional funding through bilateral multilateral and donor organization okay so IBCA टा हम कोन पय पढिलु because big cat summit हबा को जाउछि न्यू दिल्ली रे okay थीम मन रखिबो and IBCA रो बेसिक जिंस ओडा मन रखियो बस okay आ पढिबा ठीक अछि इंडिया न्यूजीलैंड साइन हिस्टोरिक कौन पे कुआ गला जानछ के ना न्यूज़ टा पढ़छ ना नहीं पुराना हे गला एक्चुअली तो लास्ट वीक में पढ़ेबा कथा बट रही जाई तो सदबाज यूरोपियन यूनियन सहित आम डील साइन करथिलु सेटा भी न्यूज़ रे थिला क्वेश्चन भी आस्थिला किछरा एग्जाम रे रिसेंटली हैला तो न्यूजीलैंड सहित भी वर्तमान गोटे ट्रेड डील साइन हेछि ओके सो दैट इज इंपोर्टेंट इंप्लीमेंट हेनी हबो बट कौन चेंज हेछि देखो so the graphic list select products on which India will be reducing or eliminating tariffs India tariff लगेबो नाही को जिंस ऊपर as well as items excluded from the deal ए deal रे को items excluded नाही सब एथरे तमे देखिया पाइबो so immediate elimination हला wool ए सब गुडा को टोटली तमरो एलिमिनेट करा जाईची ओके को गुडा को एक्सक्लूड करा जाईची एटा होची इंपोर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट्स ऊपर माने ताको ए लिस्ट ही रखा ही नहीं क्षीर दही ए सब जिंस गुडा को एनिमल प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स शुगर आर्टिफिशियल हनी कॉपर हला एल्युमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स ए गुडा को एक्सक्लूड कर दिया जाईची को गुडा को तमरो इंक्लूड कराइची किंबा टैरिफ रिडक्शन कराइची तो वाइन और फार्मा इंपोर्टेंट है ना टैरिफ आमे पकेबू नहीं न्यूजीलैंड ऊपर पॉलीमर एल्युमिनियम आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स अच्छा एटी भी तमर किछटा एल्युमिनियम आर्टिकल्स अछि एटी भी एल्युमिनियम आर्टिकल्स अछि देखिया गोडे कोन ठीक अछि देखि सो इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइंड ए लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट marking a major milestone in bilateral ties. The fast track pact aims to double trade $5 billion in 5 years. Trade ta obviously double hobo ame jodi tariff kamoju tax kamoju then obviously trade ta bhalo hi hobo by expanding the market access, reducing the tariffs and boosting cooperation in goods, services and labor. The free trade agreement will enter into force after the completion of all domestic procedures and ratification in both countries. So, main जिनस हला 100% duty free access provide करा जाउछ माने tax पूरा free
कहबाकू चले बूस्ट MSMEs services mobility and includes a 20 billion USD investment commitment. माने India will invest in New Zealand, strengthening trade and economic ties. It balances market access with domestic protection, enhances Indo-Pacific cooperation, and expands India's global trade footprint under the Vikshit Bharat 2047 vision. What are the key highlights basically? प्रथम है unprecedented market access for Indian export. एबे ए जिनसटा एबे मोदी कहला पर आउ टिके बुझ परथबे तमे जिनसटा हला तो FTA grants 100% duty free access to Indian exports in New Zealand. India जहाँ भी एक्सपोर्ट करिवो न्यूजीलैंड रे टैक्स देवा को पड़िबो नै एक्सपोर्ट्स कथा एटी पड़ला हला हमको एक्सपोर्ट रे ही बढ़िबार अछि ना एबे हमको इंपोर्ट कमेबार अछि एक्सपोर्ट बढ़ेबार अछि एक्सपोर्ट किंतु बढ़ेला बेलको हमको यूएसए पूरा टैरिफ लगे दोछि किंतु न्यूजीलैंड रे हमरो टैरिफ लागिबो नै माने टैक्स फैक्स लागिबो नै ड्यूटी फ्री एक्सेस बूस्टिंग MSME एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर जेमति कि हमरो टेक्सटाइल जोटा कि हम एक्सपोर्ट करूछु लेदर हम एक्सपोर्ट करूछु आ जहाँ भी इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करूछु सेतरे किछि टैक्स लागिबो नै ओके इट रिमूव्स अर्लियर टैरिफ्स 10% टैरिफ लागुथला अप टू 10% टैरिफ आगुरु लागुथला जोटा के जीरो हो जाइछि इंडिया गेन्स ड्यूटी फ्री एक्सेस टू की इनपुट्स लाइक वुडन लॉक्स coking coal and metal scrap reducing cost and boosting manufacturing competitiveness. India has offered tariff liberalization on 70% of tariff lines covering about 95% of bilateral trade value. हला तामन कोन बुझिलो मने मु खाली गाई चलछि त माने खाली है ना India has offered tariff लिबरल रहे टैरिफ केते पाखापाखि 70% ऑफ टैरिफ माने जोटा कि तमरो 95% ट्रेड वैल्यू रो किछि तुमको टैरिफ सेठी दबा को पड़िबो नहीं while 30% of these lines will see immediate duty elimination the rest will undergo phased reduction over 3 to 10 years माने धीरे धीरे टैक्स हमें रिड्यूस करिबो फेज बाय फेज 10 वर्ष भीतर बुझिया protection of sensitive domestic sector to protect the interest of domestic farmer amaro domestic farmer mankaro support pai our producers pai India has kept 29.9% of tariff lines in the exclusion list jota me कहली exclude को गुडा करा जाई छी dairy products को totally exclude कर दिया जाई छी milk cheese yogurt हला sensitive agriculture product onion peas corn ए सब को हमें से लिस्ट रे रखिनु हला बिकॉज से माने फिर अगेन नहीं जीवे तो फिर फार्मर मन को कौन बेनिफिट हबो ओके आर्म्स एंड एम्युनिशन हैला सेटा को भी हमें रखिनु लिस्ट रे एंड स्पेसिफिक जेम्स एंड ज्वेलरी इज आल्सो नॉट इन द लिस्ट हैला एगुडा को सेल ट्रेड डील रे नहीं तो जदी मु कहूची टैरिफ कम होची कि ड्यूटी फ्री एक्सेस करूची को गुडा को नहीं इंपोर्टेंट हैला को गुडा को नहीं प्लस New Zealand has made a binding commitment to invest 20 billion USD in India over the next 15 years. Next 15 वर्ष रे New Zealand आमर भी इन्वेस्टर है आमे भी इन्वेस्ट करिबो हला दी जन को एटा ट्रेड हिच. The agreement includes a rebalancing clause to provide a framework for addressing any shortfall as head of services sector. New Zealand offer market access in 118 service sector हला माने आमे जो गोडा को एक्सपोर्ट करिवो हमको गोटे मार्केट दरकार ना एक्सपोर्ट करिया पे तो से एक्सेस प्रोवाइड कर दे छी न्यूजीलैंड कि तुमको जदी सर्विसेज भी प्रोवाइड करिवार अछि एबे जिंता हमें यूएसए को सर्विस प्रोवाइड करथुलु हला टैक्स लगे देला कि नै से ऊपर तो हमें न्यूजीलैंड को भी सर्विस प्रोवाइड करि परिबो से एक्सेस से दे छी सर्विसेज ओके तो हमें कहू गुड्स एंड सर्विसेज तो गुड्स कथा हमें देखिलु सर्विसेज रे आईटी सर्विसेज हे गला एजुकेशन सर्विस हे गला फाइनेंस सर्विस हे गला टूरिज्म सर्विस हे गला ए सब को मार्केट एक्सेस हमको न्यूजीलैंड प्रोवाइड करिवो ओके ता छडा आउरी भी बहुत सारा सब सेक्टर्स अछि बूस्टिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स वुमेन एंड यूथ ओके हमको अल्टरनेटिव्स दरकार ना वर्तमान
यूएसए पर यूएसए सहित जहाँ भी इश्यूज चलती केतबेले कौन हम कि आम भी जानू है सब ट्रम्प मूड उपर रहा है तो आमको अल्टरनेटिव रूट्स आम ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन सहित आम ट्रेड डील साइन कलु आम ब्राजिल सहित ट्रेड डील साइन कलु आम न्यूजीलैंड सहित ट्रेड डील साइन कलु कौन पे गुड्स एंड सर्विसेज टाको एक्सपोर्ट करिया पे ओके नॉट ओनली गुड्स बट सर्विसेज एज वेल सेटा मु कहूची mobility and employment opportunities the free trade agreement creates new pathway for Indians with 5,000 temporary employment entry visas माने एतिकी employment entry visa temporary पे से provide करिबा न्यूजीलैंड हैला तो तुमको जदी टेम्पररी पीरियड पाई भी जिबार अछि एम्प्लॉयमेंट वीजा नै कि तुम जाई परिबो 5000 वीजा पर्यंत से तमरो दबा पे राजी हेची अप टू 3 इयर्स अक्रॉस सेक्टर लाइक आईटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ओके तो जदि तुमको जॉब भी मिलछि तमे जाई परिबो से फ्रीडम भी मिलला आउ मेन जिंस हला इट रिमूव्स caps on Indian students allows 20 hours per week work during study माने एटा कोन कैप लगैथिला जोथि कि माने तमे एति काम करि परिबोनी जो माने इंडियन स्टूडेंट्स माने जे कि पाठ पढंती तमे ए काम करि परिबोनी से काम करि परिबोनी एति घंटा काम करि परिबो ए सब कैपिंग गुडा को से धीरे धीरे रिड्यूस करूछि ऑफर्स पोस्ट स्टडी वर्क राइट अप टू 3 to 4 years पाठ सडिला परे भी तमे 4 वर्ष पर्यंत रही कि काम खोजो काम करि परिबो ओके दैट इज इट बी गुड इंपोर्टेंट थिंग्स एंड इंक्लूड्स वर्किंग हॉलिडे visas boosting global exposure and skill mobility सब जिंस गुडा का बेनिफिट हमरो रहउछि अच्छा the FTA promotes agriculture growth through centers of excellence better planting material research and technical support to improve productivity supply chain and farmer income imports like apple kiwi ए जहाँ भी लिखाई छी हैला आर रेगुलेटेड थ्रू टैरिफ रेट कोटास हैला एटा हम इंपोर्ट करू तो तार भी टैरिफ टा रेगुलेशन हबो ensuring market access while protecting domestic farmer the free trade agreement enables a mutual recognition arrangement is सब जिसो इतने important नहीं but India exports 80 plus organic products which with exports to New Zealand at 2,401 megaton expected to grow further under MRA mutual recognition arrangement okay खास करके बासमती राइस चा फ्लैक्स सीड ई सब गोल एगुडा को कोन माने टिके कॉस्टली हम कहि परिबा बासमती राइस टिके कॉस्टली प्रोडक्ट्स गुडा एगुडा को हमें ए एमआरए अंडर एक्सपोर्ट करिबा ताको ओके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमें किछटा एक्सपोर्ट करू नहु जो गुडा को बहुत हमर प्रोड्यूस हुए एग्रीकल्चर माने फार्मर मान को जेमति खेती न हुए सेटा हमर मेन एम अदरवाइज जो गुडा को टिके एक्सपेंसिव विल try to export it obviously okay New Zealand will amend its geographical indication GI tag law within 18 months to allow protection of Indian goods beyond wines and spirits enabling registration of iconic Indian GI products in its market kon bujilo तारो जो GI लॉ अछि ताकू से चेंज करबा को राजी हेछि ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंडर रे तार जो जीआई माने जियोग्राफिकल इंडिकेशन रो लॉ अछि 18 मास भितर से सेटा को चेंज करबो कोन पे टू अलाउ प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन गुड्स वाइन्स और स्पिरिट्स को छाड़ीगी जहाँ भी हमें एक्सपोर्ट करिया बहुत सारे जिंस हम एक्सपोर्ट करिबा तो ता हमर बहुत सारे जिंस जीआई प्रोडक्ट्स भी रहला से भितर तो ता को जेंति हैम्पर हबो नाही तो सेटा से एंश्योर करिबो ओके तो दैट इज आल्सो ए पॉइंट भी इंपोर्टेंट जदि स्टेटमेंट पचार दिए देन से जीआई रो किछि लॉ चेंज करूची कि यस से करूची ओके सो ता सहित से गोटे स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स ऑफ ओरिजिन भी लगाउची टू एंश्योर जेन्युइन वैल्यू एडिशन ओके backed by verification mechanisms and safeguard to prevent misuse and ensure benefits reach authentic Indian exporters हैला इंडियन एक्सपोर्टर मान को जति के बेनिफिट मिलिया कथा मिलु तांकर नुकसान किछि न हो एक्सपोर्ट करी कि ना ओके सो बेसिकली अप टू माने पूर्व एटा प्री टैरिफ माने प्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केते टैरिफ लागुथुला
टेक्सटाइल एंड एपरल पाखापाखि अप टू 10% लगुला ये सब ऊपर बर्तमान 0% लगुच ओके लेदर फुटवेयर 10% लगुला नाउ 0 ये सब आम एक्सपोर्ट कथा हम कहूँ सब है इंजीनियरिंग गुड्स उपर 10% पर्यटन लगुला से भी 0 हो गला फार्मास्यूटिकल्स रे 5% पर्यटन लगुला से भी 0 हो गला एग्रीकल्चर एंड एलाइड एग्रीकल्चर भी सब जिनस रोनी कि जिनस रोच 5% लगुला 0 हो गला मेराइन प्रोडक्ट्स रे 0 हो गला प्लास्टिक्स एंड रबर रे भी 10% लगुला 0 हो गला इलेक्ट्रॉनिक्स रे भी 10% लगुला 0 हो गला केमिकल्स रे भी 5% लागू होता 0 हो गला तो এটা ছোট কথা নুহ হ্যাঁ সেইপাই হিস্টোরিক ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট বলি কুহগলা তো এতিকি জিনিসরে আমার टोटली वर्तमान किसी भी टैरिफ लगिब नहीं प्लस को जिनस गुड़ाक एक्सक्लूड करा जायछि डेयरी प्रोडक्ट्स ए सब जिनस मन रखार अछि हैला कोटा इनक्लूड करा हेछि माने कार एफटीए माने एफटीए पर कार टैरिफ कमी छि आउ कोडाक एक्सक्लूड कर दिया जायछि हैला से सब मन रखिबा तो एटा 27 एप्रिल रे तमरो एटा साइन हेतिला ओके कौन डाउट अच्छी बच्चा किस डाउट नहीं तो कौन 8 डिग्री चैनल कहाँ को सेपरेट करे 9 डिग्री चैनल कहाँ को सेपरेट करे फर्स्ट टाइम सुन ना गुड़ा की सुन गल्फ ऑफ कौन से स्टेट ऑफ हॉर्मस कहाँ कहाँ को कनेक्ट करे गल्फ ऑफ ओमान आउ पर्शियन गल्फ तो सेमिति जेतिकी भी जो स्टेट्स गुड़ाक अच्छी आज जाएगी प्रथम काम है सेटा देखिबो कोडा कहा को कनेक्ट कर आ गुटे कोन देइतिली काम एनडीसी रा पूरा डिटेल पड़िबो कंट्रीब्यूशन कोन कप पड़िबो माने तमे सेरा भी रिसेंट ही पड़िबो रिसेंट रे कोन एनडीसी सब अचीव करिछि कोन तार फ्यूचर टारगेट्स अछि लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड इंपोर्टेंट ठीक अच्छे थैंक यू सिस्टम टा चेंज हो एमती कर थैंक यू एवरीवन ऑनलाइन भी आज ऑनलाइन को बेसी मु टाइम दे पारे नहीं तुम मान को पढ़े कि नहीं इम्पोर्ट हम एक्सपोर्ट ऊपर बेसी फोकस आमर वर्तमान तो रही न्यूजीलैंड भी माने ये इन्वेस्ट करिबा ना सेटा भी गोटे मेजर पॉइंट कौन कुछ डाउट अच्छे मिनी कोइटा कोठी कोटा 8 डिग्री टा लक्षद्वीप और मिनी कोय 9 डिग्री टा कहा को भरोसा करिवो चैट जीपीटी को ना गूगल को थैंक यू एसएम एजुकेशन थैंक यू वर्षा थैंक यू गुड नाइट 9टा बजगला।